Good evening, students. Now we will proceed further in the physics chapter electricity. Today we are going to study the Ohm's law. Ohm's law gives us the relationship between V and I, that is potential difference और current के बीच का जो relation है वो बताता है कि अगर हमने potential difference को change किया तो current कैसा behave करेगा. Now see this figure which is given in the 12.2 वाला जो figure है, ये एक circuit है जिसमें एक सेल लगाया है, फिर देर इज़ अ रेजिस्टेंस आर, देर इज़ वोल्ट मीटर, देर इज़ एम मीटर एंड देर इज़ की यानी स्विच. सेल के वहाँ पे देखोगे कि तुम्हें डॉटेड ब्लू लाइंस दिख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम बारी बारी पहले हम एक सेल लगाएंगे, फिर हम 2 सेल लगाएंगे, फिर हम 3 लगाएंगे, फिर देन द 4th सेल. ओके, नो सी द कॉलम टेबल ओवर हियर for the observation. Okay, so simple circuit, conducting wires है, एक resistance add किया है, ammeter is there to measure the current flowing through the circuit, voltmeter is there to measure the potential difference of the circuit across the points x and y, and as you know voltmeter is always connected in parallel and ammeter is connected in series. So see the observation table, serial number 1, number of cells used in the circuit is 1. अब इसमें से how much current is flowing that ammeter is going to show you. So ammeter के readings यहाँ पे लिखना है. Then potential difference across the nichrome wire. Wire कौन से material का है? nichrome का है. Take down the note readings of your voltmeter and write it over here. फिर V upon I को calculate करो और जो भी आता है लिखो. Then second row, now एक के जगह पे अभी 2 सेल लगाओ. Again measure the current, measure the potential difference, and again find out V upon I and write down. Then take 3 cells, again measure the current flowing, measure the potential difference, मतलब कि देखो ammeter what reading it is showing, what reading voltmeter is showing, and again find out V upon I. Again in the 4th one, now you put 4 cells, again see how much current is flowing, how much is the potential difference, again calculate V upon I and write down. Now you will find that this V upon I column is constant. जैसे अगर पहले में तुम्हें V2 था और अगर I was 10 then 2 upon 10 that is 1 upon 5. Then second में भी you are going to get suppose say 4 upon 20, फिर 4 upon 20 लेंगे तो 1 upon 5. तो whatever be the value of V and I, V upon I was always found to be constant. So this is actually experimental, we can say verification of Ohm's law. अभी हमने जब ग्राफ प्लॉट किया V and I का, taking I in the x axis and taking V on the y axis, you found out to be a straight line. ये देखो ब्लू कलर का स्ट्रेट लाइन है, फिगर 12.3. सो स्ट्रेट लाइन होता है, इसका मतलब क्या है? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, और ये ग्राफ ओरिजिन में से पास होता है. सो there was now this was found out by a German physicist George Simon Ohm, and he found out the relationship between the current I flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminals. और क्या है उसका law? The potential difference comma V across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains constant. मतलब फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए. तब हमने देखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हम जितना बढ़ाते जाएंगे करंट फ्लो भी बढ़ता जाएगा, पीडी कम होता जाएगा तो करंट भी कम होता जाएगा. तुमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन पढ़ा है मैथ्स में. सो वी एंड आई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन. इसी को कहते हैं ओम्स लॉ. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं, देखो ब्लू में लिखा हुआ है नीचे, V is directly proportional to I, which means that V is equal to say constant into I, so V upon I is constant. Now this constant is nothing but R, that is your resistance. So you get V is equal to IR. Now V is equal to IR is the mathematical statement of Ohm's law, where V is the potential difference across a wire, I is the current flowing through the wire,
and R is the resistance offered by the wire. Now what is resistance? रेजिस्टेंस यानी कि कोई भी वायर अपने में से करंट को आसानी से फ्लो होने नहीं देता है, वो उसको रेजिस्ट करता है. रेजिस्ट यानी रोकना, रोकता है. तो हर एक की कैपेसिटी अलग होती है रोकने की. जो ज़्यादा रोकता है उसमें से करंट कम फ्लो होता है, और जो कम रोकता है उसमें से करंट ज़्यादा फ्लो होता है. So this is known as, R is known as the resistance, and it is a property of a conductor to resist the flow of charges. जो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, their resistance is very low, and which are bad conductors of electricity, their resistance is very high. So अभी इक्वेशन है V is equal to IR, you can write it as R, whichever form you want. R is equal to V upon I, जैसा भी तुम्हें लिखना है you can write. So this is the explanation of this page.